In the far eastern frontier of India, where the hills of Arunachal Pradesh meet the borders of Nagaland and Myanmar, lies a village shaped by nature, history, and tradition. Hidden among rolling mountains and dense forests, Pongchau stands as a symbol of resilience and cultural heritage. For generations, its people have lived in harmony with the land, preserving customs passed down through centuries while embracing the aspirations of a changing world. This is Pongchau. This is a day in a village. As dawn breaks over Pongchau, the village slowly awakens. The morning air is cool and fresh. The hills echo with the sounds of birds and the first activities of the day. For the people here, each sunrise marks the beginning of another journey, one built on hard work, family, and community. In every household, the day begins with simple routines. Meals are prepared over wood fires. Families gather before heading to their respective responsibilities. These daily moments form the heartbeat of village life. नमस्कार एंड वेलकम टू द दीदी अरुण प्रभा। चलिए आज हम आप लोगों को हमारा अरुणाचल के एक ऐसा जगह लेके चलते हैं जो कि हमारा इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट या अरुणाचल प्रदेश के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में आता है, जहाँ पे बसा हुआ है हमारा अरुणाचल के वन ऑफ द मेजर ट्राइब वांचो कम्युनिटी के लोग। तो ये जगह जो बसा हुआ है हमारा इंडो म्यांमार बॉर्डर में या नागालैंड बॉर्डर के पास में, वो गांव का नाम है पंचौ, जो कि घेरा हुआ है चारों तरफ पहाड़ों से, गहरा जंगलों से। और तो हम आप लोगों को ऐसा जगह लेके चलेंगे आज। तो आप सब हमारे साथ चलिए, यहाँ के लोगों के साथ हम रूबरू करते हैं। यहाँ में आखिर यहाँ के लाइफ और यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, ये लोग अपने लाइफ को किस तरह से जीते हैं, हमारा वांचो कम्युनिटी के लोग। तो इस चीज़ को हम आपको दिखाएंगे, तो आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए। Pongchau occupies a unique place on India's eastern frontier. Located in Longding district of Arunachal Pradesh, the village shares close geographical ties with Nagaland and lies near the international border with Myanmar. For generations, these mountains have served not as barriers but as pathways connecting communities, cultures, and histories. The landscape is rugged yet beautiful. Its forests provide sustenance. Its rivers and hills shape the rhythm of life. पंचाओ गांव वालों के पास में अपना खुद का ज़मीन होता है जो अपना पुरखों से चलता आ रहा है, जिन पे ये लोग अपना खुद का खेती करता है। और यहाँ के लाइफ जो है ज़्यादातर खेती पे ही गुजारा होता है। इनका गुजारा के ज़्यादातर खेती से ही ला के खाया पिया, इस तरह से इनका ज़िंदगी चलता है। तो यहाँ पे लोग सुबह होते ही उठ के खेती जाते हैं और दिन भर खेतों में काम करके शाम को वापस लौटते हैं।
In this remote corner of the country, nature remains an inseparable part of everyday existence. The people of Pongchau have long depended on the land for their livelihood. Agriculture remains one of the foundations of village life. From preparing fields to harvesting crops, every season brings its own responsibilities. Work here is rarely an individual effort. Neighbors help one another. Families work together. The values of cooperation and mutual support remain deeply rooted within the community. तो अभी जो आप जो दिन में खेती जाता है, तो खेती जो करते हैं आप लोग यहाँ में, तो खेती में आप लोग क्या क्या काम करते हैं और वहाँ पे आप लोग खेती में खाने के लिए या खेत में जो भी चीज़ क्या क्या चीज़ लगाता है और वहाँ में काम कैसे करते हैं दिन में? Ikom na bana phungong kai pu tung kai pu chi hum kai te o hing kai te pu khutok le kai la kom la sa aling pu Nila sa amo ko yapi. ni la sa amok pu to achi anya ni ne ta nik chai la ta nik tung la kai la ga pang sa aling de kom la ni na ina ikom ne la pu ha chi pong no kai lai man no ala ha mun mo ko lo long la achi ala ha mun mo ka sa pu na mo kom na na to achi agam hamong no kom hamong la na ali te pun ko Chị sống ba cha lai mình nô, aga nào ada menu anh yi nô tây bu, aga chị agi mu knoi tây vang tây à. Ko matak wan su ko matak azu apa man bang bahatang ko azu apa lam tanggan wang bahatang ko matak agai hanyu mente hapa mente agai kuyai azu dien ka ga sa thang ka ba ma thang ka ko ma ya bang te ka laban na om ali te ka te song pa lai tinu ho ti ju le kuskuri ton bi ko ya ku ning ma atong le ku ning ma atong ila lai nu hoi ga ton bu no ko te song pa lai hanula khadi ma hanyap ku lai man no te song pa la to ku ni na aga hom ali te mo nga aza tim sa a anap tim sa a la ko ma ko ka to bang sa a la ku ni ne ha ma ga ju pa ki ha ma gong bang ba jaw phao ma ka bang ba jaw azui pai la phao ma chaka ha ma chaka lam ngui hai ya ta ka sai pa hai ya ta ho cha hu ni hai ya ta chaka gala ya pu ku ni na la ba chan jang jang mak alaga ka ja ti bi chan jang jang mak ni ala ha thang to amung ning ma ma la lam ngui ja bi jing cha ja sa ko mi ya la ko ku ni ga tai pu la wan su chen na ko ala jong ba jaw phung gong tam ma ne phung gong tam sa bây giờ cô nhịp tam sa bây giờ hoàn số cô mà năng tung sa bây giờ tung đập suy sa bây giờ là cô một cái sa là giá tỷ bưu là cả Beyond the fields, another journey unfolds each morning, the journey of learning. Education has become one of the strongest aspirations for the younger generation of Pongchau. Parents encourage their children to pursue knowledge, believing it will open new opportunities while helping preserve their cultural identity. These classrooms are shaping the future leaders, teachers, officers, and entrepreneurs of tomorrow. पोंगचाउ ब्लॉक का ये सबसे पुराना स्कूल है। प्राइमरी जब से स्टार्ट हुआ यहाँ से बहुत लोग सफलता होकर भी निकल आए। यहाँ का पोंगचाउ बक्का ब्लॉक में अभी जो हम लोग का प्रेजेंट एमएलए साहब है हुनचुन गंदम सर, वो भी यही स्कूल से निकालने वाला है। तो ठीक ठाक ही चल रहा है यहाँ से अच्छा प्रोडक्ट ही निकल रहा है। तो हम लोग उम्मीद करता है कि फ्यूचर में भी बहुत ऑफिसर्स निकले ये स्कूल से। पहले तो
माँ पिताजी ज़्यादातर जो हम लोग का लोकल फील्ड काम करते हैं या खेती, उसमें जाने के लिए ज़्यादा फोर्स करते थे। पर आजकल तो सब समझदार हो गया, क्योंकि जो चेंजेस आ रहा है सब इधर रिमोट एरिया होने से भी लग चुका है, जान चुका है, सब एडवांस हो रहा है। तो पढ़ाई लिखाई का महत्वपूर्ण जो है इम्पोर्टेंस ऑफ ये स्टडिंग, वो तो सबको लग चुका है, जान चुका है। तो अभी फ़िलहाल सब अपना बच्चों को अच्छा स्कूल में भेजने का ही सोच रहे हैं। जी, ये PM श्री स्कूल बनने के बाद तो बहुत फैसिलिटीज़ भी मिला है यहाँ में। जैसे आतन तिलगरिंग लैब मिला है, तो हमको यहाँ में एक्सपर्ट टीचर तो नहीं था, तब भी कुछ तो सामान तो मिला है इसके बाद, और वो लोग ने ट्रेनिंग भी दे के गया, तो हम लोग को टीचर्स से मैनेज करके कुछ तो सीखने मिला है। वो लोग बहुत कुछ सामान है उसमें, जैसे मैकेनिकल चीज़ है, इलेक्ट्रिकल चीज़ है, तो बहुत कुछ बच्चों ने भी इंटरेस्ट दिखाया उसमें। और हम लोग को अभी ये फ़िलहाल स्मार्ट क्लासेस का फैसिलिटीज़ भी मिला है। स्कूल में हम लोग का ये सोलर पैनल्स लगा के दिया है, तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सहयोग मिल रहा है, तो भरपूर फ़ायदा उठा रहा है यहाँ स्टूडेंट्स लोग, अच्छा है। तो इम्प्रूवमेंट भी दिखाई दे रहा है उसमें ना। Pongchau is home to the proud Wancho people, one of Arunachal Pradesh's indigenous tribal communities. Their history is preserved through oral traditions, cultural practices, and collective memory. Each generation inherits stories from those who came before them. Stories of courage, stories of migration, stories that define the identity of the community. Wansu kema nya ga chele ba kema halong sang bu kema nya tai banok ti le nya tam ba zat ti le lam go ye e psi ba ma ngala ngoi la tai ga sang la wansu kema nya tam ha o le la kema akaw sai sai ko ma nya ga la tam na ti nya tam ba ko ma phao ma tam ti bu phao ma bai tam ma tu le nya ga hapta ma cham le nya lam ma ko ma ka la ti bu nya ga ko ma zaga ma cha zaga ma hum ku ba zaga tai bu na ko hum ko kom hapta ma cham ka la ti bu galat tam ba nya sari pati ma tem ma la ali pe ma ko ma ha chai la ko ma ga nya ga la ya ko ti la ko ma jing ba ya pa nok le nya tam ma nok te la ti la ke ma ga le e si la ke ga la tai bu ga la ga nya ga Borma sai mina goi phale gama Nagaland sai mina goi phale nya gan ga ya le nyuma ganglam ma gala continue lagaga nya pa union gala kala nging ro kham na gala tai bu ganyang tai ba chi nya la chi uam ka ko ga sari party ho ya uam ka ko jong pe gam ka ko ga gu phai kai kala party kala chi nya ga gala kapla banga ti la ham chu malang gala lang la gala sap na be nya tam pa nya tan me gan ta hap ni nga jana man hape sang ma ga be phal la ga la ga tam la ga ti ga la sa la ti na ko wan su ke ma kharak pu ke wan su nya tam ko mai si le ariu lam phang wan su tu se be te la tai bu lam to wan su ko me nya ga bi che ga la tam na tai bu nya ga nok cha ma 2000 pung 3000 pon ko ma ga tai ganyang te bi kia won pu nya pa union se bai mama sa ta mot te pheri de sa ha bai le nya chung ma so gong ko ma ganyang important ga la ko ma nya ga tam la ga la tai bu la ko aga borma man Nagaland ma za bai khini ne ga nya ne cha ma pa tai la nya gan ga ya kum chele nya pa gru bla tai pu la pa te gan ga cha li mi government ga ta ka che phong at pa mai si ne za tai pa ko ma ga tai la tai ga wan su wa nya chele pa ga halong ngai le ha wa nyu te ke mi bi ga ting ha pang ko hi. Life in Pongchau is built upon strong social bonds. The village functions as an extended family where cooperation remains essential.
faith plays an important role in the lives of many families in Pongchau. It provides spiritual guidance, strengthens community bonds, and inspires values of compassion and service. The church remains a place where people gather not only for worship but also for fellowship and support. Across the village, the energy of youth is visible everywhere. Sports, especially football, has become an important part of community life. The football field is more than a playground. It is a place where friendships are formed, talents are discovered, and dreams begin to take shape. मेरा नाम मत्तोन पंसा है और ये हमारा गांव का जेनरेट ग्राउंड है। यहाँ में हम लोग दोस्त लोग शाम को हमेशा प्रैक्टिस करना जाता है और मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है। आगे में अपना गांव को, अपना डिस्ट्रिक्ट को, अपना स्टेट को फुटबॉल खेल के आगे ले जाना चाहता हूँ। हम लोग का यहाँ में गांव में जो है जेनरल ग्राउंड इतना भी बड़ा नहीं है और हम लोग का फिर भी यहाँ में हम लोग शाम को हमेशा दोस्त लोग प्रैक्टिस करने आता है और यहाँ में खेल के अच्छा लगता है हम लोग। Alongside agriculture, the people of Pongchau are also skilled in hand-weaving traditional attire and crafting beautiful bead necklaces and ornaments. These traditional crafts not only preserve their rich cultural heritage but also provide opportunities for self-employment and income generation. Oma aga wapa aga tanya ke humaka hanai gamma hoi humaka hanai tungi humaka hanai sai humaka hanai kharok be important asang tibi ko maga par koe jinga aga mai le jamok pa ge jawab be jawab ko ma chali thang ko be gang ali gang anga le jui kuri te bu aga Tadu aga dosi jaja aga jawab gang cham gang ani le la rok te bu poma aga gi ja thang pa poma aga ta haja jaja te ko te bu aga tadu lung ko ye thang pa gaga phang du ho na tho sat te ko te bu ko ma wan su ko ma Hamok pete mentai, chami ko meding pu, hami ko mele gaila jabu, ko ma kompne ngunjali, hawani menang, patau ko ma dam, timme yang mantui, hon hulai ham chen pelalasan, cakan, amma, sa na mama hakma gong pe sabu le to. Kom mà bắt đầu chính luôn mà kom tùy bên này tìm đột điệp lom mồ hay cô mà kom tùy bên nguồn cha vậy tối ngày mama wala là bu sang ngày mama đinh la bu cuối va bơ cái haman bơ pa lại gam acha haman bơ pa acha bơ trái sa cây u ha mà mấy bê cái sa cái acha pa trái sa cây la sa la ja bu la ja bu Kom nang, waso kom nang. Lato to kom tem mok pe, tem sa pe, hawa ni mo kom tui pe. Patau gaga sang to aga pat kom aga long ding sai kon me sama pe tem diplom mo hoi pe. Patau sai kon te ga. Patau sai kon me koma tem diplom mo hoi. Koma kon te thikai mo te हम खूबी नौकरी मोते गल खूबी नौकरी ते भी चले मामा सुला माला तोंगा पगेम गाम छू हम काला छू गोंग पगेम ले साला गला ला जापू
gama phau ta kala phau kapla ga hang la ala ja wang te ga chama le kom tim develop mo hoi khrok pa ha ba nyu ngan te pu patau jing chen patau wa lam achama le la ko ma le wan khu kha ma ale ja wang te pu wan ni mai mai le mo ngui di mai mai le mo ngui le te pa long ding district ma pa patau eu ko mau patau no keu ko ma sahab te pu la go be sa be emle a thang thang ramma minister da thang thang la chala thang go be kom sai kon te tim develop mo hoega achamali nawam me ngun hatai pa kaye government school ma kala ali menu bate anga menu bate le nawami ale tai wang tai ga aga kom ga man chang aga nok mo pa nok khanyak jap kom male yak chu la la ja wang tai go ado mok pa sa bali ne ramme gong pa gai bali ne ga mong ne acha gai bak dong gale ga nying mok la sa la ja pu ga nying tam ha chui la ja pu mama ham mong cheta mama jinglong cheta ado gon men ne vong lên mà phì là to cả ngà là cố bất tây à cố bất tây là cố bất cái cha là xã vắng tây cả com năng vốn bên cái ngành thuê tìm mồ tây là quấy à mong vậy. As the day draws to a close, Pong Chau gradually slows its pace. Farmers return from the fields. The evening offers time for reflection, storytelling, and togetherness. It is during these quiet moments that the true spirit of village life becomes most visible. Pong Chau is more than a settlement nestled among mountains. It is a living story, a story of heritage and hope, of resilience and community, of people who continue to honor their past while preparing for the future. As another day comes to an end, the village rests beneath the vast night sky. Tomorrow, the sun will rise again over these hills, and the story of Pong Chau will continue. A story written not in books but in the lives of its people.